So our next speaker is from valuation domain, totally finance domain, and let me introduce him. So hi Sanskar, how are you? Hi, I'm Hi. great, Ashwini. You tell. Yeah. So guys, मैं आपको बता देता हूँ. मैं और संस्कार हम दोनों का डोमेन सेम है वैल्यूएशन. So and Yeah, Sanskar is from BDO. So Sanskar, the mic is yours. yeah. Congratulations to all for clearing your inter exam first. So, my name is Sanskar. I have cleared my C inter exams in May 2022 with an All India rank 30. Currently, I am pursuing my articleship in BDO from in the domain valuations. So, speaking about my domain, first, I would like to tell like how my day look like, and what do I do in the entire day. So, like my work is in valuation, so my work revolves around transactions. So, for example, like whenever there is a transaction happening in any industry between listed companies, between private companies, they have to arrive at a certain valuation. For example, आप भी आज कल घर लेने जाते हो, तो आपको बायर को और सेलर को एक वैल्यू पे एसेटेन करना पड़ता है कि लाइक buyer is also ready to give that amount and seller is also ready to accept that amount. So in that is the just raw case for valuation in companies. So whenever a seller is selling his company, he has to ascertain that he is getting the right amount, and a buyer who is buying, he also assures that he is paying the right amount. So, in my domain, I particularly use DCF models like discounted cash flow models, company screenings, company comparable methods, CTM methods, etc., to calculate a valuation of a company which derives its fair value. Also, apart from that, I am involved in venture capital funds, portfolio company valuation. So, for venture capital funds, I would like to explain like you have heard like this startup got this funding. For example, Zomato raised $2 billion, $3 billion, etc. at that valuation. So, these venture capital funds they get money from their partners, and they have to deploy that money into startup companies. These startup companies are very early stage companies. For example, they are raising just their Series A round, seed round, etc. So for that also we need to ascertain the valuation of that startup company कि भाई उस startup में पैसा डालना है तो क्या किस valuation पे पैसा डालना है. That also we need to ascertain. So in my domain, I am more involved in the startup culture. Like I used to value startups a lot. So this is about my domain. Also, I do valuations संस्कार, regarding. Yeah, yeah. वन थिंग जो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, ये वही वैल्यूएशन, मैं आपके में पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूंगा. ये वही होता है ना जो शार्क टैंक इंडिया पे कंपनीज आती हैं एंड बोलती हैं हमें ये Yeah, फंडिंग चाहिए इस वैल्यूएशन पे. yeah, yeah. So we are the one who drive that valuation. राइट राइट राइट. Yeah, yeah. Yeah, go on, go on. Also, there are some kind of valuation for reporting purposes also. For example, you have to test an asset for impairment, like whether that asset should be impaired or not. These are the basic works that we do during my articleship. Yeah, that's all regarding my profile. Okay, so Sanskar, can you just tell us about your interview experience and how you So, reached that yeah, BDO? yeah. People say that cold mailing don't work, but yeah, it worked in my case. I just mailed HRs. I was pretty sure that I want to do a domain in deal advisory, be it M&A tax or valuation. So yeah, I continuously mailed HRs. Yeah, like I got thousands of rejections from HRs as well. Not even going to the round, directly rejections that vacancy is not there, you are late and all. But yeah, one HR from BDO called me a sudden day that, yeah, I am. She just took a HR round of mine, like asking me basic questions uh, like what are your strengths and weaknesses. These are the basic questions that they ask. Then I arranged my interview 2 3 days later that with a manager at BDO. Yeah, that was my like first go to experience through interview.
राइट। एंड तो एक चीज आप बता सकते हो, आपका डे कैसे रहता है वैल्यूएशन में? लाइक जैसे मैं बता देता हूँ कि अकाउंट जो स्टैट ऑडिट वाले हैं, वो तो अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह उनका या सारा कुछ वेरीफाई करना होता है, राइट? तो लाइक मैं तो आपके डोमेन से कनेक्टेड हूँ, तो हमारे डोमेन में क्या होता है, एक बार आप बता दोगे कि Yeah. मोस्टली नॉलेज किस चीज की यूज होती है? First, I would like to tell you the interview questions or experience that I faced. राइट राइट So, राइट। yeah, in general, because you know that valuation is just a part that is very little in FM only. That is true, very little. You have not studied it inter as well. So, आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा कि मर्जर के टाइम पे कैसे स्वैप रेशियो निकाल रहे हैं, ये सब कोई नहीं पूछेगा आपसे। सिंपल रहेगा कि एफएम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पता होना चाहिए कि अगर आप 10 रुपए आपको कल मिलेंगे तो आज उसकी क्या वैल्यू है। सिंपल है, उसको आपको फ्रेम करके बताना है। सेकंड, जो मेरे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कैश फ्लोज के रिगार्डिंग पूछा था। जो बेसिक आप कैश फ्लो का क्वेश्चन करते हो ना अकाउंट्स में कि ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट। So, second question was that. And also, you should learn the basic terms of valuation like FCFF, FCFE, when is that used, when is that used. For that, matlab, I would like to tell you channel, YouTube channel, The Valuation School. वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और मेरे साथ तो नहीं हुआ था, लाइक आई वाज नॉट गिवन अ फाइनेंशियल मॉडल टू प्रिपेयर, बट इन मेनी फर्म्स लाइक इन टीआरसी आल्सो articles were given first raw data to create their own financial model to test their excel skills and all, that they know basic about financial modeling and all. So you can refer videos from Valuation School, the Wall Street School in YouTube, like they can tell you the basic how to create the model. Otherwise you will learn through your articleship also, but yeah, just learn the basic formulas and all to drive a financial model. This अंडरस्टूड। was my interview. For my day look like when, for example, a company valuation arrived, that might be going for raising funds or maybe going for a merger or something else. Like they also make us, अगर आपको भी पता चलता है ना आपकी कोई एमडी चला रहे हो आपकी कितनी वैल्यू है सबको जान के अच्छा भी लगता है, तो कोई कोई इंटरनल पर्पस के लिए भी आ जाता है कि हमें बता दो हमारी कंपनी की। सो whenever a company arise for the valuation, they provide us the projections that are like in future हमारा रेवेन्यू ऐसे ऐसे ग्रो होगा, EBITDA इतना इतना ग्रो होगा। दे प्रोवाइड अस विद द बेसिक फैक्ट्स। देन हमारे को क्या करना होता है, इस इंडस्ट्री में गो थ्रू करना होता है। हमें उनके लिस्टेड कॉम्स जो कि 15-20 साल से उस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, हमें उनके बारे में रीड आउट करना होता है कि वो किस रेट से ग्रो कर पाए हैं, वो क्या मार्केट में कितना उनका मार्केट शेयर है, और हमारा जो हमारी जो कंपनी है वो कितना मार्केट शेयर गेन कर पाएगी, या जो वो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है फ्यूचर में ऐसी हो पाएगी कि नहीं। कि बिकॉज आप लिस्टेड कंपेरेबल्स को देख के देख सकते हो जो 15-20 साल से अपना डेटा पब्लिश कर रहे हैं मार्केट में, कि जब वो 10% ग्रो कर पाए तो आपकी जो कंपनी जो बोल रही है कि मैं 15% करूंगी तो वो कैसे कर पाएगी। तो उसके पास कुछ एक्स फैक्टर होना चाहिए, तो वो आइडेंटिफाई करना। देन जस्ट फिर वो एक्सेल गेम स्टार्ट होता है कि लाइक आपको प्रोजेक्शन दी जाएगी, आपको उनका कैश फ्लो निकालना है कि इस साल और कंपनी के पास एंड में सारे खर्चे करने के बाद कितना कैश फ्लो बचेगा। दैट यू हैव टू कैलकुलेट फॉर एवरी ईयर, फॉर एग्जांपल 22, 23, 24, 25। देन यू हैव टू अराइव एट अ डिस्काउंट रेट कि जो पैसा 10 साल बाद आएगा उसकी आज वैल्यू क्या है। तो उसको डिस्काउंट करने के लिए एक रेट हम आइडेंटिफाई करते हैं, दैट वी अप्लाई टू द प्रोजेक्शंस एंड ट्राई टू अराइव एट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनी। राइट। These this एंड is in layman. वो रेट एंड संस्कार, दैट रेट Huh? इज दैट वी हैव स्टडीड इन सीए इंटरमीडिएट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ Yeah, कैपिटल। CAPM model like we generally use राइट in finding cost of equity. So you should know that. Yeah, इंटरव्यू में बहुत जनरली पूछ लेते हैं। राइट राइट Yeah. राइट। तो अब एक चीज लास्टली, अब जो सीए स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि हमें कोई एडिशनल मतलब पढ़ना क्या है वैल्यूएशन का, अगर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उनको क्या क्या पढ़ना है सिंपली, So, जैसे अगर आपसे कोई पूछे। keep in राइट mind for the firm you are going to give interview, you should look at the transactions that the firm has executed. For example, आप TRC या BDO के लिए जा रहे हो, तो आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में सर्च करोगे ना कि गूगल पे सर्च करोगे कि कोई ट्रांजैक्शन BDO ने हेल्प करा हो, तो
उस वो ट्रांजैक्शन के बारे में रीड आउट करना कि उसमें बीडीओ ने क्या काम करा था, टीआरसी ने क्या काम करा था, क्या वैल्यूएशन आई थी। इफ यू टेल दैट टू द इंटरव्यूअर ना, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका देगा कि दैट पर्सन हैज नॉलेज, ही हैज इंटरेस्ट। सेकंड पॉइंट, गो थ्रू योर एफएम आई गेस, या तो इकोनॉमिक्स हट गया है आई गेस, तो हमारा एफएम ही होता या था। बट एफएम तो अब एफएम एफएम के एस्टिमेट बोलते कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करना। थर्ड इज कैश फ्लोज, और चौथा मार्केट न्यूज, लाइक दे टेस्ट यू थ्रू मार्केट न्यूज एज वेल। आपको रिसेंट मर्जर्स और ट्रांजैक्शंस या कुछ बेसिक, कुछ बड़ा सा चल रहा है, लाइक उससे हमारी इकोनॉमी डिपेंड हो रही है, तो उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दैट्स व्हाट, लाइक बेसिक, मतलब न्यूज़पेपर भी नहीं कहूंगा, मेरे को भी बोरिंग बोरिंग लगता है, मैं भी नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर। बट ये है कि 5 मिनट इन शॉर्ट सी स्क्रॉल कर लो, या आप इकोनॉमिक टाइम बस डाउनलोड कर लो, ऊपर नोटिफिकेशन ऑन कर लो, नोटिफिकेशन आएगी, बस वो रीड करते रहोगे ना, तो भी मतलब आप थोड़ा थोड़ा वो रहेगा, आपको नॉलेज रहेगी। अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा, आप अपने आप उसको न्यूज को जाके रीड कर लोगे तो हो जाएगा। बट या ये नहीं कह रहा न्यूज़पेपर खोल के बैठ के पढ़ने लग जाओ, मैं भी नहीं पढ़ता। तो दैट्स बेसिक, बस ये कर लो, हो जाएगा। राइट। एंड संस्कार लास्टली, मतलब सब मैंने जो बहुत स्टूडेंट से सुना है कि वैल्यूएशन इज अ वेरी नीश डोमेन, राइट? या तो इसके बाद क्या एग्जिट अपॉर्चुनिटी है वैल्यूएशन में? या सो यस। like same, I was in that dilemma for a year. I was like कि मेरे को ऑडिट में स्विच करना चाहिए, बिकॉज मेरे को राइट, तो कुछ सेम सेम यार, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सेम यार। होगा यहाँ से, बिकॉज नीश है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखो, एंड व्हेन आई टॉक टू माय सीनियर्स, एंड आई हैव सीन एग्जिट अपॉर्चुनिटीज इन माय ओन फर्म, तो एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स निकलती है, लाइक यू हैव टू पब्लिश दैट इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स कि आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, फॉर इंटरनल पर्पसेस आप करते हो, तो वो आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल गई। दूसरा, फंड मैनेजर्स, लाइक a lot of fund managers who worked past in valuation profile are handling portfolio of around 3000 4000 crores on a daily basis. थर्ड इज वेंचर कैपिटलिस्ट, लाइक आई एम कीन ऑन दैट ऑल्सो, कि मेरे को वेंचर राइट। कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री में जाना है। सो हमारा इंटरेक्शन डेली पे वेंचर कैपिटल्स के साथ है, हमें पता है वो किस स्टार्टअप में कितना पैसा डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, उनका माइंडसेट समझ आ रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म में वो भी देख सकते हो। चौथा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी लाइक यू कैन गेट एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज, बिकॉज आप इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझ रहे हो, बिकॉज आप वैल्यूएशन कर रहे हो, तो आपको इंडस्ट्री की थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक को वैल्यू कर रहे हो, तो आपको उस बैंक के मल्टीपल्स पता होते हैं कि मार्केट में आज बैंक्स के स्टॉक्स किस मल्टीपल पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो नॉलेज आपको मतलब बहुत इंटरव्यूज में, किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक में भी जाओगे आप, लाइक वेदांता एंड ऑल में जाओगे, तो आप माइनिंग इंडस्ट्री की अगर वैल्यूएशन कर कर आ चुके होगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज आपको पता है माइनिंग इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है। तो वो कंपनीज आपको बल्कि एज एन हेड रखने के लिए एक्साइटेड रहेंगे। सो दैट्स द एग्जिट अपॉर्चुनिटी आई थिंक कैन हैव। दैट्स वेरी नाइस संस्कार। या सो लाइक आई थिंक आपने ओवरऑल सब कुछ कवर कर लिया वैल्यूएशन का, जो मैं चाह रहा था कि स्टूडेंट्स को पता लगनी चाहिए, राइट? फ्रॉम दिस। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स थैंक यू सो थैंक्स। मच।